आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम, हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर हेमेंद्र सिंह चंडालिया जी एवं डॉक्टर प्रोफेसर प्रशांत सुभाषराव मोथे जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्राध्यापकगण एवं प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी का हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित तुलनात्मक विश्व साहित्य विषयक इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का ये आयोजन विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों तथा साहित्यिक परंपराओं के मध्य संवाद की सशक्त संभावनाओं को उद्घाटित करने वाला एक सुसंगठित मंच है। तुलनात्मक विश्व साहित्य न केवल विविध साहित्यिक धाराओं के अंतर संबंधों को समझने का अवसर प्रदान करता है, अपितु ये हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में साहित्य की व्यापकता, बहुलता और अंतर सांस्कृतिक संवाद की गहनता से भी परिचित कराता है। अब मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव के साथ हमारी अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, अमेज़न की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिका तथा भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक विशिष्ट एवं सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप नई दिल्ली स्थित विदेशी भाषा संकाय इग्नू की पूर्व निदेशिका रह चुकी हैं। आप एक सुप्रसिद्ध कवयित्री, सृजनात्मक लेखिका एवं लोक साहित्य की विदुषी हैं, जिनके नाम पर लगभग 23 मौलिक एवं संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं तथा अंग्रेजी अध्ययन में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। आपके अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया गया है आपको, जिनमें 2024 में माइकल मधुसूदन अकादमी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 में टैगोर सम्मान और ऑनररी फेलोशिप तथा वर्ष 2026 में एम्बेसडर ऑफ इटर्निटी अवार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपके व्यापक शोध क्षेत्रों में नव साहित्य अध्ययन, आलोचनात्मक सिद्धांत, लोक साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा तुलनात्मक विश्व साहित्य जैसे विविध एवं महत्वपूर्ण आयाम समाहित हैं। अब मैं आदरपूर्वक हमारी इस गरिमामयी संगोष्ठी की अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमें अपने प्रेरणास्पद विचारों से अभिभूत करें। प्लीज। सभी को नमस्कार। Thank you, Dr. Paramita, for this generous introduction, and of course, many congratulations for holding this important lecture series seamlessly throughout the year and still carrying forward. I welcome both the speakers for today, Professor Hemendra Chandalia and Professor Prashant Mothe. Before I get into the topic or the topics that both of them are going to speak, which I took from Dr. Paramita, I would like to put it on record here that Professor Hemendra Chandalia and Professor Prashant Mothe, they have been contributing to Indian academia in their respective capacities in a big way. Professor Hemendra Chandalia is a very well-known figure, a very renowned personality. He was a former Vice-Chancellor. Dr. Paramita will introduce him more officially. I would rather leave it to her. But as far as I understand about his work, he is a folklorist and he is a specialist in culture studies, cultural studies, and he is one of those people who you can actually trust with work. Whenever I have requested him to do any work, he has never failed me, and the journal that he has been doing, very recently he offered a copy of the journal to me, and I was going through it, and this journal is definitely a major contribution to folk literature, to English studies in India, to cultural studies, and various other subjects. He wears many colored hats.
So Professor Hemendra Chandalia is one of my personal favorite individuals and scholars, and I'm glad that today he accepted our invitation. And about Professor Prashant Mothe, he is a giver. If you ask me to just say one word about Professor Prashant Mothe, my answer would be he is a giver. He knows the joy of giving. He has been editing many, many journals for decades, and he has been consistently contributing to research, to higher education, and he has expertise in Indian knowledge systems, in English studies, and varieties of subjects which Dr. Paramita will introduce. Professor Prashant Mothe has published many youngsters in the country and otherwise. People depend on him when they have a promotion coming up, when they have to get some API, when they have to do some new research to be visible, or anything like that. They just get in touch with Professor Prashant Mothe, and before I knew him in personal capacity, I knew that he was there for many scholars across the disciplines and across the countries and continents. I met him several times in many important meetings, confidential meetings. He maintains a low profile. He doesn't speak about himself, but he is a powerful voice. So I'm so glad that both of you became a part of Hindi University lecture series, which we have been doing since more than a year now. Almost 50, 60 people have spoken. The best brains, the powerful researchers of the country and otherwise, they have spoken on comparative world literatures for us in three languages: Hindi, English, and Bangla. We are multilingual, and we have four disciplines in the university, and are looking forward to introducing more numbers of MA programs, and comparative world literatures will be one of those. We have already submitted a proposal for that, and in near future I hope that we will be in a position to design the syllabus of the subject comparative world literatures. That is when I will take the help of both of you after today's lecture. And Dr. Paramita told me that you or both of you are going to speak on important subjects, and Professor Chandalia would be speaking on indigenous literature and worldview. What a fascinating and important subject. Indigenous knowledge systems, folk literature, these are subjects which are coming up in a big way. We designed an MA program in folklore and cultural studies for my university, IGNOU, when I was there up to last year as a professor and a director. And that is when Professor Hemendra Chandalia came in touch with me. And we had multiple interactions, discussions, and he came out of the program with glorious colors, with very high percentage, though I mean, when I say that he is one of my students, I'm rather proud. He is one of my brightest, in fact, not one of my, he is my brightest student. Let me say that here. So after this MA in folk literature, Professor Chandalia is still, coordinating with me. We are designing some other important projects to introduce folklore chairs, indigenous knowledge system chairs, Indian knowledge system centers in various universities. We are still working on that. So when it comes to a teacher and a student like Professor Hemendra Chandalia and me, it is mutual understanding, mutual exchange of ideas. It's not like a teacher and a student, rather sometimes he becomes my teacher, sometimes I become his teacher. So we are coordinating, we are collaborating, and I'm so happy and proud, Professor Chandalia. So today, your topic may emphasize various things, and one of them could be ontology and folk literature beyond human indigenous literature challenges. That could be one. And then, may I request you to give us some information, our students, some ideas on story as knowledge system? Because when it comes to folklore, a lot of people think that folk tales, folk stories, people associate folklore with folk tales, folk stories. So kindly take us beyond folk stories, folk tales, and theorize those for us. And folk stories as knowledge systems, and not just as representations of various languages. Probably you can also give us a little bit information on that. And maybe you can also talk to us on a resistance through narrative sovereignty as folklore. So these could be some of the things that are my questions, my queries. I would like you, being the expert that you are, to address some of these. Of course, you have a very interesting PowerPoint. I had a quick look at that.
And now, coming to Professor Prashant Mothe, I am given to understand that he is going to speak on across continents, across cultures, a comparative study of Marathi and African fiction. Uh, this is a very important subject. Uh, I think none of our speakers have spoken on Marathi literature as one of our Bhasha literatures, making comparative pedagogy between Marathi literature as one Indian Bhasha literatures, one of the Indian Bhasha literatures, and then comparing that with some Western literature or some world literature, which in your case is African fiction. I'm interested in both of them. I have read quite a bit of Marathi literature in English translation and African literature. Anyway, we all have been teaching in English departments. So your topic rings a bell. It is so close to my heart, and I'm looking forward to listening to you today. And after that, probably we will be in a better position to discuss more with you. But yes, from your topic, what is my expectation? Let me just put quickly. Maybe you can give me some information on shared post-colonial realities vis-a-vis Marathi literature and African fiction. Maybe you can just give some information to me if you like. And then, if possible, give us something on orality as narrative strategy and cultural memory in both the literatures. Because when we design our MA in comparative world literatures, we are going to take this orality as one of the blocks or one of the units. So your intervention may critically help us. So I'm looking forward to that. And yes, maybe you can also give us a little bit of information on subaltern agency and local modernities of Marathi literature, and then how from that micro world you take it to the macro world of comparative world literatures. These are some of the questions that are in my mind today before I listen to both the eminent scholars. But yes, once again, I invite both of you to be important parts of Hindi University, our family, and contribute to our research and our courses and our syllabus design. And thank you, Dr. Paromita and Aman, for holding these seminars seamlessly. Now I leave it to Dr. Paromita to invite the speakers one by one. Welcome and namaskar. बहुत बहुत आभार मैम। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट वक्ताओं का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज के प्रथम वक्ता प्रोफेसर प्रशांत सुभाषराव मोथे जी अंग्रेजी भाषा शिक्षण, भाषा विज्ञान और भारतीय अंग्रेजी साहित्य के विशेषज्ञ हैं, जिनका शैक्षणिक योगदान अत्यंत समृद्ध और प्रेरणादायक है। डॉक्टर प्रशांत सुभाषराव मोथे महाराष्ट्र के उमरगा स्थित आदर्श महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और आपको लगभग 18 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त है। आपके विशेषज्ञता के क्षेत्र अंग्रेजी भाषा शिक्षण यानी ELT, भाषा विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स, द भारतीय अंग्रेजी लेखन है। आपने फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मिस्र जैसे देशों में आयोजित अनेक अंतरराष्ट्रीय वेबिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिए हैं। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर में मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक हैं, जिनके निर्देशन में लगभग 7 शोधार्थी PhD पूर्ण कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद के डिग्री कार्यक्रमों के लिए सामग्री विकास में भी योगदान दिया है। आप महाराष्ट्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में अंग्रेजी विषय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सक्रिय सदस्य हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में आपने 7 पुस्तकों का सह संपादन किया है और अंग्रेजी तथा सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित कई महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। आपके शोध कार्यों में लगभग 33 शोध पत्र और 27 पुस्तक अध्याय प्रकाशित हैं। आपने थाईलैंड और सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने 75 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों का आयोजन किया है, अनेक व्याख्यान संसाधन व्यक्ति के रूप में दिए हैं, 100 से अधिक PhD शोध प्रबंधों का मूल्यांकन किया है और लैंगलिट नामक UGC स्वीकृत शोध पत्रिका के संपादन इन चीफ के रूप में भी आपने कार्य किया है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर प्रशांत सुभाषराव मोथे जी को कि वे अपने व्याख्यान से हमें समृद्ध करें।
Sir, please. Thank you, ma'am, for your generous introduction. Respected Vice Chancellor, Professor Nandini Sahu, ma'am, Professor Hemendra, sir, distinguished dignitaries, esteemed faculty members, and research scholars. So it is a matter of great honor and privilege to be invited to speak at this prestigious Hindi University. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Professor Nandini Sahu ma'am, for providing me this valuable opportunity to share my thoughts on an intellectually, we can say, enriching and socially significant topic in front of such a intellectual audience. So, friends, today I'm going to speak on a comparative study of Marathi Dalit literature and African literature, voices of resistance and identity. So, in my talk, first I will throw light on, since I have got half an hour for my presentation, so I will be very brief and very uh, concrete with my presentation. First, I will speak about the relevance of comparative literature in the study of world literatures. Then I will throw light on a comparative study of Marathi Dalit writers and African writers. Further, I will discuss more about three major Dalit writers and and three or four major African writers and their contribution towards. And towards the end of my talk, I will throw light on themes and common concerns when we compare these, uh, we can say, uh, novels. So where at the beginning, when we see comparative literature, why it is so much importance, as rightly said by Professor Vice Chancellor, that comparative literature is not merely the study of text across languages, it is the study of human experiences across cultures. So uh, it allows us to transcend boundaries of nation, caste, race, and language. So, all in all, comparative literature helps us to understand how writers from different parts of the world express similar, we can say, similar concern and mm, is my slide visible to everyone? I think yes. So it allows that different parts of the world express similar human experiences through their works. So in today's globalized world, comparative literature promotes intercultural understanding and broadens our literary perspectives. So, the relevance of comparative literature in the study of world literature, we can see with start with comparative literature broadens intellectual perspective. When we compare works from different cultures, periods, or languages, we begin to see both similarities and differences in human experiences. So, themes like love, identity, power, suffering are universal, but they are expressed differently across cultures. So it broadens our intellectual perspectives. It comparative literature breaks cultural boundaries. So literature is often studied within national or linguistic limits, like English literature, Marathi literature, Dalit literature, or African literature, Commonwealth literature. But comparative literature crosses these boundaries, encouraging dialogues between traditions. So this is especially important in a globalized world where cultures constantly interacts. So comparative literature deepens our interpretation capacity. Reading a single text in isolation can limit our understanding. When we read texts alongside others textbooks, we gain richer insights into narrative techniques, symbols, themes, meaning. uh, in short, we can say
becomes more becomes more layered. So comparative literature promotes critical thinking as well. So when we see comparative study requires analysis, evaluation, synthesis, the questions like why are these texts similar, why are they different, what cultural, historical, or philosophical factors shape them. So this develops, these kind of questions develops strong mm, analytical and research skills of a scholar. So when we see the comparative literature also promotes, it supports interdisciplinary study. So comparative literature is not confined to literature alone. It often connect with history, philosophy, sociology, even film studies, translation studies, and even technology. So it supports interdisciplinary study. Comparative literature encourages tolerance and global understanding. By engaging with a diverse cultural voice, comparative literature focuses on empathy and respect. So it helps readers appreciate diversity rather than fear about it. So it encourages tolerance and global understanding, which is an essential quality in today's era. So uh, at the end, comparative literature is vital for translation, we can say translation and cross-cultural communication. So, comparative literature plays a key role in understanding how ideas move across languages. It highlights the importance of translation and the challenges of conveying meaning between both cultures. So, here I would like to throw light on a few writers. First, I will start with Marathi Dalit writers. So, in Marathi Dalit writers, the first Dalit writers which I want to focus in my today's talk is that Daya Pawar, known for his pioneering autobiography Baluta, which was published 1978, which was one of the first explicit Dalit autobiographies translated into English, often described as a crucial text of self-assertion. So this autobiography described poverty, humiliation, untouchability, hunger, and social exclusion faced by Dalits in rural and urban Maharashtra with a direct and uh, language, we can say. Like major features of Dalit literature, Baluta emphasizes uh, protest against caste hierarchy, assertion of Dalit identity, dignity of labor, and the demand for social equality and human rights. So it's a honest and self narration and emotional realism make it a strong example of Dalit literature's core aim, that is giving voice to marginalized communities, exposing structural injustice in Indian society. The second important fiction which I would like to focus here is that Baby Kamle's The the prisons we broke. In Marathi, it is written as a Jina Amucha. So, which this novel, this fiction, which provides a strong, reflexive feminist perspective on the Maharashtrian caste system from a women's point of view. So, it exposes how the Mahar community faced both caste humiliation and interior, we can say, internal patriarchal control. So, highlighting the interaction of caste and gender as a dual system of oppression. So, here the character feels doubly suppressed. So, in line with the Dalit literature features, it uses autobiographical truth, direct language, and lived memory. Uh, 1 minute.
the direct language and lived memory to reject dominant upper caste narratives and assert subaltern voice. The third important uh, fiction here I would like to throw light on is that a prolific author and theorist known for his autobiography, that is Sharan Kumar Limbale's. This is The Outcast. Okay, and very famous. Marathi we call it as a Akramashi. So Sharad Kumar Limbale's The Outcast is a foundational Dalit autobiography that presents the lived experience of being half caste, revealing identity crisis and social exclusion within caste society. So here the characters actually uh, more focus about this Sharan Kumar Limbai's narrations talks about in The Outcast about poverty, humiliation in a stark and realistic mode, showing how caste operates through both material deprivation and psychological alienation. So, in line with the Dalit literature features, it asserts lived experience as a truth, rejects traditional aesthetic norms of upper caste, and foregrounds the voices of oppressed as a central narrative authority. Uh, the fourth one which I would like to throw here light on is that Shantabai Kamle's author r- written one of the first Dalit women autobiographer in Marathi literature, who documented lived experiences of a caste and gender oppression in rural Maharashtra, The Wave of My Life, a Dalit women's memoirs. So her memoir, The Wave of My Life, presents a first person narrative of untouchability, poverty, and exclusion from education and social dignity. So it also functions as a testimony of our resistance. Uh, Next, here I would like to mention only quick gloss on two short story writers, a seminal figure whose short stories like Baburao Bagul's When I Hide My Caste talks about a new and intense realism of Marathi literature, breaking silence on the brutality of untouchability. And Urmila Pawar's Urmila Pawas, known for her short stories and mother wit, challenging both caste and patriarchy. This Urmila Pawar's work, Mother Wit, uh, emphasizes on self-awareness and resistance, turning personal memory into a collective voice of Dalit women's struggle, dignity, and assertion of identity, we can say. So, when we let us move towards about talks about African literature and a few uh, important three important writers like Chinua Achebe. Things Fall Apart. We all known about it. So it portrays traditional Igbo society before and during British colonialism in Nigeria. Actually, Things Fall Apart. The novel highlights the cultural conflict between African tradition and Western influence through the tragic life of Ekonono. We can say that Chinua Achebe shows the destructive impact of colonialism on African identity and community. So, in relation to post-colonial literary features, it reclaims African narrative authority, challenges Eurocentric portrayals and assertion, the complexity and dignity of indigenous African identity. The next important African uh, novelist, which I would like to throw light here, is that uh, Ngugi wa Thiong'o's major work, A Grain of Wheat,
Actually, it explores Kenyans' struggle for independence from British colonial rule. So the novel presents themes like betrayal, sacrifice, freedom, and national identity during the Mau Mau movement. Actually, uh, Thingos highlights the psychological and social effects of colonialism on ordinary people. So, through multiple characters and perspectives, he shows talks about struggles of Nigerian people. The another important playwright here I would like to throw light is uh, Paul Soyinka's major work, Death and the King's Horseman, is a powerful drama based on a historical incident on uh, colonial in the colonial Nigeria. So Soyinka's is a Nigerian playwright and political activist who received the Nobel Prize for Literature in 1986. He was the first Black African to be awarded this prize. So his plays like A Death and the King's Horseman explores the conflict between African tradition and British colonial interference. So Soyinka examines the themes of duty, honor, culture, colonialism, and misunderstanding between societies. So through rich symbolism and dramatic tension, this play as well highlights the importance of respecting cultural values and traditions of each and every society. So when we talk about when we compare actually, let us talk about these things. Mm, as despite when we have seen all these Dalit literature, Dalit writers and African writers, despite geographical differences, both literature share striking similarities. So Dalit literature and African post-colonial literature come from a different places, but they have speak a similar truth like people under oppression, whether caste or colonialism, use literature to express pain, asserts identity, resist injustice, and demand dignity. When we see the oppression and exploration, both literature like Dalit literature, Marathi Dalit writers, and African writers show systems that deeply oppress people and deny them basic dignity. So, actually, one group suffers caste oppression inside society, like Dalit literature, Dalit writers. The other suffers colonial oppression from outside rulers. So, search for identity. Both Dalit and African characters try to rebuild identity after loss of dignity and culture or social respect. For example, if we see in The Wave of My Life in Shantabai Kamle's work, shows how education helps her slowly build self-respect despite caste rejection. And in Things Fall Apart, this Igbo's identity collapses when Igbo tradition lose power under colonial rule. So they all are in search of identity. So resistance and protest. So literature becomes a tool to speak against injustice. Writing itself becomes a form of protest and resistance in both tradition. So in The Prison We Broke, Baby Kamble exposes how Dalit women quietly resist oppression through survival and awareness. And in Death and the King's Horseman, Ellison's ritual duty becomes a symbolic resistance to colonial interference. So, when we see human dignity and equality, both literature, Dalit literature and African literature, finally uh, demand respect and equal humanity. So,
the in for example, in The Way of My Life, Shantabai Kamble insists the education and self-expression give dignity to Dalit women. And in Things Fall Apart, Achebe shows that African culture has dignity and should not be judged as a primitive kind of object. So both literatures ultimately argue that every human culture and every human being deserves respect, justice, and equality. So, however, these are some common similarities. There are also differences. Dalit literature is often autobiographical and personal, while African literature frequently draws from oral tradition, myths, and folklore. So, all in all, to conclude here, I would like to say that a comparative literature study of Marathi, Dalit, and African literatures reveals that although they arise from different socio-cultural contexts, they are united by a common mission to give voice to the voiceless. So, a comparative study of both Marathi and African literature reveals that uh, contexts differ. The core struggle is similar. That is a fight for identity, dignity, and justice. So, both Marathi, Dalit writers and African writers transform personal and collective sufferings into powerful literary expressions, making literature a vehicle of social change. So, one line which I have mentioned here is that Marathi, Dalit, and African uh, literatures, through those separated by geography, are united by their powerful articulation of resistance against oppressions and their quest for human dignity. Uh, Here, once again, I express my sincere gratitude to Honorable Vice-Chancellor, Professor Nandini Sahu ma'am, for her visionary leadership and for organizing such intellectually stimulating platforms and giving us an opportunity to express our views and thoughts related to comparative literature. And thank you, Paromita ma'am, for handling this session very quietly. I'm eager to listen, Professor Hemendra sir, a lot. Thank you so much, one and all. सर, आपके इस सारगर्भित वक्तव्य हेतु हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में आज के अगले वक्ता डॉक्टर हेमेंद्र सिंह चंडालिया जी एक जो है प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अनुभवी शोध निर्देशक हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। आपने वर्ष 2023 में सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के डीन पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने 2012 से 2014 तक हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में डीन तथा कार्यवाहक कुलपति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 2017 से 2020 तक आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कोर्ट में नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व आपने 2010 से 2016 तक संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिशा में यूजीसी विजिटिंग फेलो के रूप में सेवाएं भी दी। आपने जो है शैक्षणिक योगदान के अंतर्गत लगभग 25 पुस्तकें और 54 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। और आपके निर्देशन में 21 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। और आपने शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की यात्राएं भी की। उन्हें जो है प्रोफेसर नंद कुमार लवांडे अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी की शासी निकाय सरस्वती सभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है।
अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे वक्ता डॉक्टर हेमेंद्र सिंह चंडालिया जी को कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। सर प्लीज। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय कुलगुरु प्रोफेसर नंदिनी साहू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के इस संवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मेरे लिए ये एक उत्कृष्ट अवसर है कि मैं अपनी बात को हिंदी में भी कह पाऊंगा। सामान्यतया मुझे अवसर अंग्रेजी में ही बोलने का मिलता है, तो हिंदी विश्वविद्यालय से इस प्रकार जुड़ने का जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए मैं विशेष तौर पर मैडम का आभारी हूँ। मेरी रुचि हिंदी कविता में है और 4 कविता संग्रह मेरे हिंदी में प्रकाशित हैं। मगर आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम तुलनात्मक विश्व साहित्य पर बातचीत कर रहे हैं और मैं अपने मित्र प्रशांत जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने जिस विद्वता के साथ तुलनात्मक साहित्य के विभिन्न आयामों की चर्चा की, उससे मेरा कार्य सहज और सरल हो गया कि मुझे उस पर बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। लेकिन मैं सिर्फ गालिब को याद यहाँ करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और विश्व साहित्य के बारे में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें यह आभास होता है कि दुनिया में बहुत से सुखनवर हैं जो बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो जो एक दायरा हम लोग बना लेते हैं अपने आसपास, उससे निकलने का एक अवसर हमें देता है तुलनात्मक साहित्य। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ थोड़ा अनुवाद काम भी मैंने किया है, कि एक खिड़की है जो खुलती है हमारे दिमाग में, जिसके सहारे से और जिसके माध्यम से हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। यदि विश्व साहित्य के साथ हमारा परिचय न हो तो संभवतया हम बहुत ही एकाकी और एकांगी विद्वान ही बन जाएंगे। विश्व में इतना कुछ श्रेष्ठ लिखा जा रहा है और उसको जाने बिना एक लेखक और एक शोधकर्ता के रूप में हम कहीं बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा जो महत्व है इस विषय का, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये मानवता को जोड़ने का काम करता है, संस्कृतियों के बीच सेतु का निर्माण करता है। और इस समय हम विश्व में जिस तरह का टकराव और हिंसा देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अगर साहित्य का अध्ययन करें विश्व के विभिन्न देशों के लोगों द्वारा रचे हुए, तो शायद इस कटुता को, इस विद्वेष को, इस टकराहट को कम किया जा सकता है। जो हम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संवाद को अगर बढ़ावा देते हैं तो शायद एक दूसरी प्रकार की दुनिया के निर्माण में हम लोग सफल हो पाएंगे। और इसीलिए मैंने आज जो विषय बात करने के लिए चुना है वह आदिवासी साहित्य पर बात करने के लिए चुना है, क्योंकि इस समय दुनिया में जो विश्व दृष्टि है, जो एक वर्ल्ड व्यू है, या कैसी दुनिया हो, इस बारे में और विचार करने की जितनी आवश्यकता आज है, संभवतः पहले कभी नहीं थी। इस समय जो विश्व बना हुआ है, मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति केंद्रित है और जो विकास की हमारी अवधारणाएं हैं वह उपभोग पर आधारित है। तो अधिक से अधिक आप उपभोग करें, अधिक से अधिक उत्पादन करें, वही राष्ट्रों की समृद्धि का सूचक बनता चला जा रहा है। ये जो दुनिया बनी है ये प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित है। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्वानों को देखें, जिनके विचारों को इस समय पूरे विश्व में माना जा रहा है, चाहे वो एडम स्मिथ हो या जे.एम. कीन्स हो, वे एक खुले बाजार की विश्व व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें एक निर्बाध प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। जो मूल अवधारणा है इस प्रतियोगी समाज में वो यह है कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट एंड द मार्केट प्रिवेल्स, यानी बाजार ही सर्वशक्तिमान है। और उसमें वे ये कहते हैं कि द कंज्यूमर इज सॉवरेन, उपभोक्ता सर्वशक्तिमान है। लेकिन कई बार हम लोग इसमें इस द्वंद में फंस जाते हैं कि हम स्वयं को
उपभोक्ता मांगने लगते हैं, जबकि उपभोक्ता वही व्यक्ति है जिसके पास क्रय शक्ति है। अर्थात ये हुआ कि इस समय जो विश्व व्यवस्था है वह उन 10 या 15% लोगों के हाथों में है जिनके पास क्रय शक्ति है और इस बाजार व्यवस्था का वो सर्वोच्च लाभ उठा सकते हैं। इस अवधारणा के बरक्स या इसके विकल्प के रूप में हमारे पास क्या कोई विचार है? तो मुझे लगता है कि जो पूरे विश्व का आदिवासी जीवन है और आदिवासी साहित्य है, वो हमें इस प्रकार की एक वैकल्पिक व्यवस्था की कल्पना करने की सहूलियत देता है। उदाहरण के लिए आप सामूहिकता की बात कर सकते हैं। जो आदिवासी समुदाय है वो पूरी तरह एक सामूहिकता के दर्शन से अपने जीवन को संचालित करता है। उनके अंदर समुदाय की भावना बहुत ही सशक्त होती है और साथ ही वो अपने संसाधनों का दोहन अपनी समृद्धि के लिए करने की बजाय इस प्रकृति को उसका संरक्षण करते हुए मात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक के लिए उसका प्रयोग करने की बात सोचते हैं। तो इन सारे विचारों पर बात करने के लिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा अवसर है जब इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से मैं उन सब विषयों की बात कर पाऊंगा जो इस समय एक नई दुनिया बनाने के लिए आवश्यक है। एक ऐसी दुनिया जो बहुलता वाली दुनिया है, जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी या इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने की कल्पना कर सकता है। अर्थात जिसमें सभी शामिल हों, सभी की भागीदारी हो, सभी की साझेदारी हो, सभी का निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण रोल हो या उनकी भूमिका हो। और जब मैं यहाँ सभी कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं न सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ बल्कि प्रकृति के समस्त अवयवों की बात कर रहा हूँ, चाहे वे पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे नदियां हैं। जो कुछ भी इस सृष्टि में है, जो कुछ भी इस पृथ्वी नामक ग्रह के ऊपर है, उन सब की सुरक्षा, उनको बचाना, उनकी बेहतरी और उनके और सुखद भविष्य के लिए हम एक ऐसी वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की कल्पना करें जो कि हम अपने आदिवासी जीवन और आदिवासी साहित्य के अध्ययन से कहीं न कहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि पूरे विश्व में जो मानवता है उसमें, जिसको फोर्थ वर्ल्ड वो लोग कहते हैं अपने आप को, फर्स्ट वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सेकंड वर्ल्ड डेवलपिंग, और इस तरीके से जो विभाजन है आर्थिक आधार पर, उस दृष्टि से जो एक पूरे विश्व का वंचित और हाशिए का समाज है, वो अपने आप को फोर्थ वर्ल्ड कहता है, जबकि मुझे लगता है कि वही फर्स्ट वर्ल्ड है। सबसे पहले दुनिया में जो आए वही आदिवासी लोग हैं और उन्होंने ही मानवता का प्रारंभ किया, जैसा इतिहास के अनेक विद्वानों ने कहा है। तो उस बहस में न जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक वैकल्पिक जो विश्व बन सकता है वो हम इस साहित्य से समझ सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो ये आदिवासी समुदाय विश्व में लगभग 72 देशों में छितरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कोई एक ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह आदिवासी देश हो, और हर देश में जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं ये अल्पसंख्यक हैं। इनकी संख्या लगभग 400 मिलियंस है, जो विश्व जनसंख्या का लगभग 6% है। और इनके पास जो सबसे बड़ी समृद्धि है उसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि विश्व में लगभग 6,700 भाषाएं हैं। उनमें से 4,000 भाषाएं ऐसी हैं जो कि इंडिजिनस पॉपुलेशन या आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है। और जो खतरा है वो ये है कि इनमें से कई भाषाएं विलुप्त होने लगी हैं क्योंकि उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में ये है कि जो जनजाति या आदिवासी भाषाओं का क्षय है या उनकी विलुप्ति है, वह संपूर्ण मानवता का एक प्रकार से नुकसान है, उनकी क्षति है। तो ऐसे में जब हम इंडिजिनस लोगों के बारे में और उनके साहित्य के बारे में बात करते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत ही एक समृद्ध भाषा परिवार हमारे बीच में है, और उसमें जो कुछ भी बोला गया है, लिखा गया है, अंकित किया गया है, वो मानवीय मेधा और मानवीय जो बौद्धिक
क्षमता है उसका ही एक हिस्सा है। तो उसको संरक्षित करना, उसको बचाए रखना और उसको विकसित करने के लिए वातावरण तैयार करना, मुझे लगता है कि संपूर्ण मानवता का दायित्व है। तो ये जो लोग हैं अलग अलग समुदायों के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, इनकी अपनी भाषाएं हैं और इन भाषाओं की विशिष्टता ये है कि वह अपने स्थानीय संसाधनों पर केंद्रित हैं। देखिए, जितना लोक साहित्य है और फिर लोक साहित्य के एक हिस्से के रूप में आदिवासी साहित्य है, उसका प्रमुख एक चरित्र या प्रमुख आयाम वो होता है स्थानीयता। It is regional in character. Most of the folk literature and most of the indigenous literature is characterized by certain local traits, local characteristics, which they derive from the geography in which they are inhabited. So, what we find in the literature of the indigenous people is a spatial local color which is reflected through the description of nature, through the description of animals and plants, and the relationship that exists between the nature around and the people who create such literature. तो जो आदिवासी लोग जो साहित्य रचते हैं उसका मूल आधार उनके आसपास का जो संसार है, जो प्रकृति है, उससे उनका संबंध कैसा है, उनका संवाद कैसा है, उसी पर वो सारी चीजें आधारित होती हैं। हम देखते हैं कि ये जो साहित्य है मुख्य रूप से मौखिक साहित्य है। अगर आप देखें, ओरैलिटी इज वन ऑफ द मेजर ट्रेट्स ऑफ ऑल फोक लिटरेचर एंड इंडिजिनस लिटरेचर्स। जो मौखिक साहित्य है, जो श्रवण के द्वारा, श्रुति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहा है। इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। और ऐसा होने के लिए उसकी एक विशिष्ट पहचान ये है कि अधिकांश जो साहित्य है उसके भीतर गेयता है, लिरिसिज्म है, वो जो क्वालिटी है जिसको कि कहा जा सकता है कि किसी भी ज्ञान के स्रोत को यदि श्रुति के माध्यम से या हियरिंग के माध्यम से आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर लयबद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। जो सांगीतिक पक्ष है उसका वो महत्वपूर्ण है। कि जितना लोक साहित्य है, जितना आदिवासी साहित्य है, उसकी एक विशेषता यह है कि वो गेय साहित्य है, चाहे उसके गीत हों और दूसरे प्रकार के फॉर्म्स हों। तो ये विशेषता लोक साहित्य की है और आदिवासी। दूसरा ये है कि जो उनके जीवन के विविध आयाम हैं वो सारा का सारा ज्ञान हमको इनके साहित्य में मिलता है। साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए, भवन निर्माण के लिए, कृषि के लिए अलग से ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। जितना ट्राइबल लिटरेचर या इंडिजिनस लिटरेचर मैंने देखा है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, उनके जो संस्कार हैं, उनके जीवन के विभिन्न जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होते हैं उनके लिटरेचर में और वो उसकी विशिष्टता को भी रेखांकित करते हैं। राजस्थान में, जैसा आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तानी प्रदेश है और उसमें पानी की बहुत कमी है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में। तो वनस्पति की रक्षा, पानी के स्रोतों की रक्षा, इसके लिए यहाँ के गीतों में, यहाँ की कहानियों में अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ का एक प्रसिद्ध उक्ति है, आप उसको सुनेंगे तो आपको आश्चर्य ही होगा कि ये कहा गया है राजस्थानी में कि शीश साटे रूख बचे तो भी सस्ता जान। इसका मतलब यह है कि यदि पेड़ को बचाने के लिए अपना सिर भी देना पड़े तो भी ये जो सौदा है ये सस्ता है। इट इज फेवरेबल एंड रिच बार्गेन इवन इफ यू हैव टू sacrifice your head to save a tree। और आपने पढ़ा ही होगा बिश्नोई समुदाय के बारे में कि किस तरह से पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, वहाँ रहने वाले हिरणों की रक्षा के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि समय द्वारा निर्धारित प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप देखिएगा कि वो
ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोगों के जीवन से जुड़ी हैं, और उनको, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वहाँ की लोगों की राजनीतिक चेतना हो, चाहे उनके इमोशनल क्रेविंग्स हो, उन सब में वो देखते हैं कि उनका प्रयोग उस गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वो कर पाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय में ऐसे गीत हैं जो वहाँ के फसल के पैटर्न्स को भी बताते हैं, अर्थात कौन सी फसल को कहाँ बोया जाएगा। जो वागड़ी भाषा में यहाँ कहा जाता है कि एरे मेरे करेला ने बस में वाया भिला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हेजेस हैं किसी भी खेत की, उन हेजेस के आसपास वो, जिसको हम बिटर गोर्ड कहते हैं या करेला है, उसको बोते हैं, ताकि वो उसकी बेलें जो हैं, क्रीपर्स हैं, वो उन हेजेस पर चढ़ जाएं। और जो मेन पार्ट है एग्रीकल्चर लैंड का, वहाँ वो लेडी फिंगर या भिंडी बोते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द फॉर्म है। तो ये सारी जो नॉलेज है, जैसे अभी मैडम ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं कि कैसे नॉलेज भी कंजर्व होती है इस तरीके से, तो ये सॉन्ग्स हैं जो कैरी करते हैं नॉलेज को भी। इसी तरीके से जो मेडिसिनल नॉलेज है, जो चिकित्सा से संबंधित है, लोगों के इलाज से संबंधित है, किस तरह से आदिवासी जीवन में वे सारे तत्व हैं जो वहीं, क्योंकि अधिकांश देखिए जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहीं आदिवासियों का निवास है, चाहे वो पहाड़ों की ढलानें हैं, चाहे वो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो रेगिस्तान का सुदूर इलाका है, तो जहाँ चिकित्सा की और अन्य सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे में वहाँ पर वो अपने स्थानीय जड़ी बूटियों से, स्थानीय जो वहाँ मिट्टी है, वहाँ पानी है, वहाँ पेड़ों की छाल है, इन सब से ही वो अपनी विभिन्न व्याधियों का, बीमारियों का इलाज करते हैं। तो वो सारी चीजें भी घुसी हुई है वहाँ के साहित्य के अंदर, और उसे अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जब मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जब आदिवासी साहित्य की बात करूंगा तो उसकी तुलना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ उदाहरण जरूर चुने हैं विश्व कविता से। अफ्रीका से, अमेरिका का जो नेटिव अमेरिकन हैं, जिसको बाहर से लोग रेड इंडियंस भी कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अमेरिकन इंडियंस कहलाना पसंद करते हैं, तो वो कुछ वहाँ के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की कुछ एक आध कविता है, और अफ्रीका के लोगों की कविता है। तो कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सम्मुख ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय है, उनका साहित्य बहुत ही समृद्ध साहित्य है। जैसा अभी भाई प्रशांत जी कह रहे थे, उन्होंने चिनुआ अचेबे का और वोल्सवेनका जी का उल्लेख किया कि अफ्रीका ने किस तरीके से उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया, और ऐसा ही एशिया में भी हुआ, भारत में भी हुआ। राजस्थान में जो भील लोग हैं, उन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और यहाँ के गीतों में अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि स्थानीय शासक जो कि अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एक किस्म की बगावत यहाँ के साहित्य में देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। मैं प्रारंभ में एक उदाहरण आपके सम्मुख रख रहा हूँ। क्षमा करें, मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करना भूल गया, बात में मैं कोशिश करता हूँ कि ये हो जाए अभी। ये है, शायद आपके सामने आ जाएगा। परोमिता जी मुझे माफ करें, मैं भूल गया अपने प्रवाह में बात करना कि इसको भी मुझे बताना है। बहरहाल कोई बात नहीं, अधिकांश बातें जो इसमें लिखी हैं मैं बोल रहा हूँ लगभग, तो बहुत ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होगा। सर आपका स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना जी, धन्यवाद। तो मैं इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो जाए। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि जो विश्व साहित्य है उसमें ऐसी अनेक बातें हैं जो हमारे राजनीतिक और
आर्थिक सामाजिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो मैं एक कविता सबसे पहले पढ़ रहा हूँ जो कि अफ्रीका के एक बालक की कविता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत मजेदार कविता भी है। वो कविता इस तरीके से है, जो बात प्रशांत जी कह रहे थे कि एक किस्म का नस्लवाद अफ्रीका में बहुत सालों तक रहा और अफ्रीका से जो लोग बाहर गए या ले जाए गए उनके खिलाफ अमेरिका में भी, यूरोप में भी एक नस्ली विद्वेष और डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को व्यक्त करने वाली एक छोटी सी कविता है। उसमें वो लिखता है अपार्थाइड के बारे में, आई बोर्न आई ब्लैक, I young, I black. In sun, I black. When angry, I black. I sick, I black. When scared, I black. I die, I black. And white man, he born, he pink. He young, he white. In sun, he red. He scared, he blue. He sick, he yellow. He die, he gray. And still you call us colored. तो ये जो कविता है इसमें ये कहा गया है कि जो अफ्रीका के काले लोग हैं जीवन की विविध परिस्थितियों में एक ही समान काले रंग के हैं, लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं या जो श्वेत लोग हैं वे विभिन्न विभिन्न मानसिक स्थितियों में या बाहर की शारीरिक स्थितियों में उनके रंग में परिवर्तन होता है, जबकि अफ्रीकी लोगों को कलर्ड कहा जाता है। तो एक किस्म की आयरनी, इस किस्म का व्यंग्य इस कविता में हमें देखने को मिलता है और उसको जो है एक उदाहरण की तरह हम देख सकते हैं कि कैसे नस्ली भेदभाव के विरोध में वहां के लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसी तरीके से एक नेटिव अमेरिकन पोइट्री है जो अमेरिका के आदिवासी लोगों ने में से किसी ने लिखी है, और क्योंकि ये स्थानीय साहित्य का हिस्सा है तो कई बार हम ये भी पाते हैं कि जो लोक साहित्य है उसमें ऑथर या रचनाकार के नाम का उल्लेख नहीं होता है। तो इसी तरह से ये जो एक रचना है वो हमें बताती है प्रकृति के साथ वहाँ के लोगों के जो संबंध है वो किस तरीके से परिभाषित है। तो उसमें वो कहा है, ओ ग्रेट स्पिरिट whose voice I hear in the winds and whose breath gives life to all the world, hear me. I am small and weak. I need your strength. I need your strength and wisdom. Let me walk in beauty and make my eyes ever behold the red and purple sunset. Make my hands respect the things you have made and my ears sharp to hear your voice. Make me wise so that I may understand the things you have taught my people. Let me learn the lessons you have hidden in every leaf and rock. I seek strength not to be greater than my brother, but to fight my greatest enemy, myself. Make me always ready to come to you with clean hands and straight eyes. So when life fades as the fading sunset, my spirit may come to you without shame. Now, in this poem, as you would see, the poet talks of a very close relationship with nature, great respect for nature, and he wants to contribute to the richness of nature. He wants to understand the messages and lessons which are hidden in the objects and phenomena of nature. In this poem, it is said, let me learn the lessons you have hidden in every leaf and row. So, whether it is a rock or a leaf,
They are an integral part of the lives of the people, and not just the human beings, but nature itself is a teacher. Later on in European literature and British literature, we talk of Wordsworth and his poetry, and there also he talks of nature as teacher. But here you can find that the author is talking of all those natural objects and phenomena which are around people and from whom they learn. I'll refer to yet another poem. This is a poem by Joy Harjo. Joy Harjo is a contemporary American, a Native American poet, and she was given this honor of American Poet Laureate thrice. She remained the 23rd Poet Laureate of America from 2019 to 2022. So she's still active, still writing, but she talks of, again, those very things which have been referred to in the previous poem, and see how she says that remember the earth whose skin you are, red earth, black earth, yellow earth, white earth, brown earth, we are earth. Remember the plants, trees, animal life, who all have their tribes, their families, their histories too. Talk to them, listen to them. They are alive poems. Remember the wind, remember her voice. She knows the origins of this universe. Remember, you are all people and all people are you. Remember, you are this universe and this universe is you. It's a very powerful poem which in a way integrates the human and the universal. So the people are the universe is people. This kind of feeling is reflected in this poem, a very famous poem with the title Remember, written by Joy Harjo. तो जो अमेरिकी आदिवासी लोग हैं, उनकी कविताओं के दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, और इन कविताओं के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रकृति के साथ उनकी कितनी घनिष्ठता है, एक रूपता है। प्रकृति ही उनका जीवन है और प्रकृति के संसाधनों के प्रति उनका जो सम्मान है, अवयवों के प्रति जो उनका सम्मान है, वो महत्वपूर्ण है। यही उस वैकल्पिक विश्व की कल्पना का आधार है। प्रारंभ में जो बात आपसे कह रहा था कि दुनिया कैसी बननी चाहिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्रकृति को या धरती को हम अपनी माँ माने, संसाधन नहीं, या अपनी प्रगति का रास्ता नहीं खोजे उसके भीतर से, बल्कि उसके प्रति समर्पण का एक भाव रखें। जब तक दुनिया में लोभ और लालच का स्थान सहयोग, सहकार और संयम नहीं लेगा, तब तक वैकल्पिक विश्व का निर्माण करना कठिन होगा। आप देख रहे हैं इस समय जो पूरा संसाधनों को लेकर के संघर्ष चल रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि आप संयम का प्रयोग करें, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे खाद्य तेल है। तो ये जो बात अब समझ में आने लगी है वैश्विक संघर्षों से, मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य में ये बात पहले से विद्यमान है, और वो इस बात का संकेत बार बार देते हैं कि हमें प्रकृति के विभिन्न अवयवों का सम्मान करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, और उनके अस्तित्व के साथ ही हमारा अस्तित्व है। उसके बिना मनुष्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह की एक कविता है जो ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं केट कैनेडी, जो वहाँ के एक आदिवासी कवि हैं, उनकी एक कविता है। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ताकि जो हमारे संभागी हैं उनको जरा सा एक अनुभव हो जाए कि कैसे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी रचनाएं, आदिवासी साहित्य उपलब्ध है, और उन सब के बीच एक किस्म की समानता है। वो सारा साहित्य, चाहे वो भारत के आदिवासियों का साहित्य हो, चाहे अमेरिका के, चाहे अफ्रीका के या ऑस्ट्रेलिया के, आप पाएंगे कि प्रकृति के केंद्र, प्रकृति उस पूरे साहित्य के केंद्र में है, और जो प्रकृति के साथ वहाँ के लोगों का संबंध है, वो एक माता और शिशु के बीच का संबंध है।
तो वो बात बार बार रेखांकित हमें इन रचनाओं में होती दिखती है। I asked my child beneath a tree, which one would you rather be, a small, slim reed or a strong oak tree? Would you be the tree if the wind blows that stands firm on the ground on which it grows, but maybe falls and maybe fails if that wind turns out to be a gale? Or would you be the soft green reed that's prepared to give and prepared to bend and survives that gale to stand again? She said, no, neither one of those. I want to be the wind. I want to be the wind. ये कविता है। इसके आगे भी कुछ भाग है, लेकिन मैंने यही कविता का एक भाग आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन की जो ताकतें हैं, जो नई पीढ़ी आई है, वो परिवर्तन की ताकत बनना चाहती है। वो कह रही है, आई वॉन्ट टू बी द विंड। न तो एक बहुत विशाल ओक का पेड़, न कोई एक छोटी सी झाड़ी जो हवा के प्रवाह से झुक जाती है लेकिन जीवित रहती है, वो नहीं। वो तो विंड जो कि परिवर्तन का एक वाहक है, वो वैसी पवन, वेग वाली पवन बनना चाहती है। और इसी तरह से भारत में भी पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में बहुत समृद्ध आदिवासी कविता है। मैं उल्लेख यहाँ खास तौर से करना चाहूँगा गुजरात के प्रोफेसर कांजी भाई पटेल का, जिन्होंने हाल में एक पुस्तक का संपादन किया है जिसका नाम है अनुत्तरित लोग। इस संग्रह में भारत की विभिन्न 140 आदिवासी भाषाओं की लगभग 500 कविताएं संग्रहित हैं और विभिन्न भाषाओं में मूल जिस भाषा में वह रची गई है वह भी प्रकाशित है, साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है। तो मैं उस पुस्तक से कुछ कविताएं आपके सम्मुख रखूंगा, जिससे कि भारत में जो आदिवासी साहित्य है उसका भी आपको एक तरह से परिचय हो जाए। एक कविता है जो असमी भाषा की है, मैत्रेयी पातर इसके मूल कवि हैं और अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी अनुवाद मैंने किया है इस पुस्तक के लिए। इसका मैंने अनेक और भी कविताओं का अनुवाद इस पुस्तक के लिए किया है, लगभग 10 कविताएं हैं। उनमें से एक का पाठ मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक सुनहरे जंगल का गीत गाते, करते अनुसरण सूर्य के मार्ग का, चढ़े एक पहाड़ी पर हम, एक लाल रास्ता और चट्टानों की एक सभ्यता, हर कदम पर ड्रैगन फ्लाइज के झुंड, पत्थरों पर लिखकर कौन छोड़ गया है हमारा खुरदरा इतिहास। वे लोग जिन्होंने बोए थे पत्थर, बन गए हैं अब पत्थरों के धर्म ग्रंथ। हमारा इंतजार करते पहाड़ की चोटी पर था खेत, हमारी निगाहों में हजारों पथरीली पत्तियां। उमस्वाई के चट्टानी सीने के भीतर जल रहे हैं इतिहास के सुगंधित धूप वृक्ष। जलती हैं दोपहरें भी, पहाड़ियों को अपने पंखों से झांपते, आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहा है भीमराज। भीमराज एक चिड़िया है, आसाम के जंगलों में पाई जाती है। थामे है अपनी चोंच में वह हमारे पुरखों की अस्थियां। तो ये एक आसामी कविता है जिसमें आप देखें कि कैसे प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य की कहानी और कथा को कहा गया है। तो ये उदाहरण है। एक अंतिम उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान की जो आदिवासी कविता है उसका एक चित्र। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध युवा कवयित्री और उपन्यासकार हैं सुनीता घोघरा, जिन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है मताई नाम से, और उनकी एक कविता है महुआ। महुआ राजस्थान के आदिवासियों के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसका जो फल होता है उसकी शराब बनती है स्थानीय, उसके जो फूल होते हैं उसकी भी शराब बनती है और इसके पत्तों का भी वो उपयोग करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है जो आदिवासी जीवन के लिए एक तरह से अमृत है। तो वो कविता में ये बात कही है। महुआ शीर्षक की कविता है जिसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। महुआ जब टपकता है वन की मादकता बढ़ जाती है,
मोहक खुशबू आकर्षित करती अपने समर्पित रखवालों को। ऊंचे वृक्ष को नमन कर महुआ को जब छूती हूँ तब धड़कन बढ़ती जाती है। टोपले जब भरने लगते हैं प्यास बढ़ती जाती है। द्रवित हो जाती हूँ तब जब बूढ़ी आंखें नम हो जाती हैं। अब व्यंजन का स्वाद बढ़ेगा, ढेकले बनेंगे, औषधीय सुरापान भी होगा, साहूकार बदले में पैसे देगा, घरेलू सामान का जुगाड़ होगा। यह जीवन वृक्ष उम्मीदों का किनारा है, मधुर सुरा बड़ा सहारा है। अब कमजोर पिता की आय बढ़ेगी और परिवार की मुस्कान बढ़ेगी। महुआ जब टपकता है, महुए के साथ टपकता है एक विश्वास बेहतर जीवन का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो कविता है, ये आदिवासी जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो विपन्नता है, उसका भी वो उल्लेख करती है। और साथ ही एक उम्मीद की किरण भी हमारे सामने रखती है कि कैसे जब फसल आएगी तो उनके जीवन में बेहतरी आएगी। तो मैं सोचता हूँ कि बातचीत को अब मैं यहीं कंक्लूड करूँ। पारोमिता जी आ गई हैं तो मुझे लगता है समय भी हो गया होगा। भविष्य में हम जब भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। असल में ये मेरा एक प्रिय विषय है आदिवासी जीवन और कविता का। मेरी एक पुस्तक भी है, ट्राइबल लिटरेचर कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम्स। तो इस पर लगातार लिखना पढ़ना रहता है। तो ये विषय मैंने इसीलिए चुना कि मैं इसके माध्यम से हिंदी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और जो वहाँ के संकाय सदस्य हैं उनको कुछ बात राजस्थान की और आदिवासी जीवन की बता पाऊँ, क्योंकि जो साहित्य का विस्तार है वो तो बहुत विस्तृत है। कहाँ कहाँ जीवन के विविध रंग बिखरे पड़े हैं। तो ये सब बातें बहुत बहुत हैं कहने को। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर माननीय कुलगुरु प्रोफेसर साहू जी का। उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पर रहा है। मैं उनका विद्यार्थी हूँ जैसा उन्होंने भी कहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेलो हेलो धन्यवाद। सर, आपके इस महत्वपूर्ण एवं कहा जाए तो चिंतन प्रेरक वक्तव्य के लिए हार्दिक आभार। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। मैडम प्लीज। Thank you, Dr. Paramita. Both the lectures were like music to my ears. I thoroughly enjoyed listening to both of them. And Dr. Prashant Mothe, he spoke on a very, very important subject. Especially, I liked his ideas regarding comparative literature, comparative subordinity as a part of literature for empathy, tolerance, global understanding. So these three are important takeaways for all of us today. And then he emphasized on ideas moving across cultures through comparative pedagogy, through translation studies. Yes, we have a department of translation studies, Professor Mothe. You will be glad to know that students and teachers of translation studies are doing serious work. They are translating seminal texts from various languages between Bangla, Hindi, English, and also other languages. And some of our students from translation studies have received excellent placements as Rajbhasha Adhikari and various other capacities last year and in 2025, and also this year Paramita will be in a position to give you better information about all the placements of our translation study students because she is a teacher from that department. And also Dr. Prashant Mothe, he talked about Marathi Dalit literature and African fiction, how they expose the structurally analogous histories of oppression that those are shaped by caste, race, and colonial modernity. How to take comparative literature beyond the discourses of colonial modernity, make them more flexible and more inclusive was the theme and the tone of his entire presentation today, which I appreciate so much. And then somewhere he mentioned about orality as the counter form, and then the anti colonial aesthetics as part of our comparative literatures.
and he hinted at alternative modernities through comparative pedagogy. One of the courses under our comparative MA, comparative world literatures MA course, will be alternative modernities. We will take your ideas there. We will take your recommended texts there. Probably you will be in a better position to contribute to our MA program with your kind of research. And you concluded by saying that comparative literature is a part of an important part of post-colonial, subaltern, and decolonization literature, which I think I are on the same page with you. And then Professor Hemendra Chandalia, your lecture, as expected, was extremely euphonic. In the beginning itself, I said that it was music to my ear. Your ideas about व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद, comparative literature is व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद. It's something that resonates with even my ideas of comparative literature. And you mentioned about the 6,700 languages in the world. In many of my lectures, I talk about those 6,700 languages, out of which 4,000 languages are endangered. They are under the dying or the endangered languages. And as folklorists, how this is our moral, ethical, and academic responsibility to protect and to preserve those languages through our research and translation. That is something that I keep on talking off and on in my lectures, and you talked about that. I'm very, very glad. And then very interesting Rajasthani folk sayings like protect trees by sacrificing your head. I didn't know about it. I'll do a little bit of reading about it. I knew about the Chipko movement, how to hold a tree to protect it. But sacrificing your head, that is, folklore has such interesting and important sayings, important anecdotes. You mentioned some of them, and the medicinal knowledge in folklore, the folk songs. And then also you mentioned about Joy Harjo. I have one of my research publications on Leslie Merman Silko and Joy Harjo. I have taken interviews with them. That paper you will find on the internet. The title of the paper, if I remember correctly, is To Touch the Land and Her People. Reading Joy Harjo and Leslie Merman Silko. I was very happy when you talked about Joy Harjo, because somehow the ideas, the writings that these two poets do, Harjo and Silko, I have always been so very inspired by both of them. And then indigenous worldview, according to your research, was something related to the ontology of the indigenous texts. That is what we have been trained with. When we write on folklore, we teach folklore or we study folklore. The ontology of the relational ontology of the folklore is something that we have been talking. We mention our scriptocentric folklores, our body-centric folklores, the tangible and the intangible cultural heritages as a part of as parts of our folklore. You mentioned all those things, and then narrative as epistemology was something that you emphasized every now and then your ideas of narrative sovereignty as the ideas of folklore, how folklore is a very, very democratic subject. It has gender, equality, it has caste, and all those things, that race and caste and class, these things that we have been talking about. So much of theorization going on there, but folklore without theorizing these things is actually practicing all the good practices, good governance. You mentioned those things in your lecture. Your lecture has contributed qualitatively as well as quantitatively to our lecture series. We are enriched by you today. So I'm extremely grateful to you for accepting our invitation and contributing to our lecture series through your research. This is just the beginning of your association with us. In future, certainly we will get in touch with you and Professor Prashant Mothe to have more lectures for syllabus design, for contribution to our journals and our publications. So let us collaborate in a more meaningful, flexible, and a more inclusive way. Thank you once again. Thank you so much, madam. Thank you for such kind words of appreciation. In fact, I have learned everything from you and the courses that I pursued. So all the credit goes to you, in fact.
I have done a PG diploma in translation also from IGNOU, besides my folklore studies. So Okay, that you have also. done so many things. You have done so many things. Now we will use your expertise in Hindi University. Sure. Thank you so much. Yes. मैडम, आपके इस मूल्यवान विचारों के लिए हार्दिक आभार। और इसी के साथ आज के इस सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं माननीय कुलपति महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरक मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। साथ ही हमारे सभी आदरणीय वक्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद, जिनके मूल्यवान विचारों ने हमें नई दिशा और दृष्टि प्रदान की। मैं सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनकी सक्रिय सहभागिता ने इस सत्र को सफल बनाया। और अंत में मैं आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों, हिंदी विश्वविद्यालय की टीम एवं तकनीकी टीम काजोरिदास रॉय एवं अमन सिंह के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। और इसी के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करते हैं और आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।